Hello, everyone. So, today we'll learn engineering mechanics in, let's say, 5 to 7 minutes. ठीक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विल डिस्कस तो मैकेनिक्स क्या है व्हाट इज मैकेनिक्स मैकेनिक्स इज नथिंग बट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं राइट I apply force on a object and how the object is reacting due to that force. Right? That's it. ठीक है? So an object, let's say this is the object. ठीक है? I have applied a force on this particular object F. Because I have applied this force, how the object is reacting. That is engineering mechanics. Now let's say how this object can react. कैसे रिएक्ट कर सकता है वन थिंग इज द ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू मूव if this is very heavy, let's say this is a wall and I am pulling it, object is not going to react. Right? So there will be no movement on the object. Then क्या होता है that means the object is resisting this particular force, है ना? Or let's say there is a table and on that table I have a block जिसका weight is mg. mg. Now, if this block is not moving, that means what? This force is being resisted by something. So, by what? By an opposite and equal reaction force. This is Newton's third law. ठीक है? This is Newton's third law of motion. So, this is one scenario when there is no movement on the object. In that case, net force is zero. What is net force? ये एक force है mg. Because the object is not moving, as per Newton's third law, there will be a opposite reaction, that is R. ये दोनों different direction में है, that means mg minus R is equal to 0. ठीक है? This is known as equilibrium. Equilibrium means if the object is static, it will remain static. If an object is moving, the object is going to move with similar velocity in the same direction. Newton's first law. ठीक है? तो this is the condition. mg minus r is equal to 0. r कहाँ से आया? r came from Newton's third law. Every action has a equal and opposite reaction. Now, let's say mg is more than r. कैसे होगा? Let's say this object I am pulling with F1 and this side I am pulling the object with F2. इस ऑब्जेक्ट को इस साइड से आई एम पुलिंग इन विथ F1 फोर्स, ऑन द अदर साइड आई एम पुलिंग विथ F2 फोर्स. तो दो चीजें हो सकता है. क्या हो सकता है? इफ F1 इज इक्वल टू F2, दैट मीन्स नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. तो ऑब्जेक्ट जो है इट विल रिमेन हियर, कोई मूवमेंट नहीं होगा. नाउ इफ कंसिडर F1 is greater than F2. Consider if F1 is greater than F2. That means क्या होगा? There will be additional force, है ना? Net force, अगर मैं जो net force का बात कर रहा था, that is summation of F. अगर F1 is greater than F2, that means this is not equal to 0. If F1 is greater than F2, then F1 minus F2 is not equal to 0. That means ये जो net force रहा, that means जो F1 minus F2 का जो वैल्यू होगा, F1 minus F2, this is equal to nothing but mass into acceleration. Newton's what? Newton's second law. Newton's second law of motion.
This is your engineering mechanics, nothing else. तो क्या होता है, इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, दो चीजें हो सकता है. वन, द फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय समथिंग एल्स. इफ आई अप्लाई F1 ऑन दिस ऑब्जेक्ट और F2 ऑन दिस ऑब्जेक्ट, अगर दोनों सेम रहा बोथ साइड से, अगर मैं दो बोथ फोर्स F1 एंड F2 को मैं अगर बैलेंस कर रहा हूं, दैट मीन्स देयर विल बी नो मूवमेंट. नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. ठीक है. अगर एक फोर्स दूसरे फोर्स से ज्यादा हो गया तो, दैट मीन्स F1 F2 से ज्यादा हो गया तो देयर विल बी मूवमेंट. मूवमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे? मास इंटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? अगर F1 F2 से ज्यादा है तो दिस साइड, F2 F1 से ज्यादा है तो दिस साइड. दिस इज नोन एज डायनेमिक्स एंड दिस इज स्टैटिक्स. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. अब इसके ऊपर ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स, क्योंकि फोर्स हमेशा सेम लाइन पे नहीं लगते हैं. फोर्स कैन बी इंक्लाइंड, फोर्स कैन बी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, and then we have to resolve that. But eventually it comes to this point, balancing forces. तो अगर मैं दो फोर्स को इक्वल कर पाया, then my structure will remain in equilibrium. Equilibrium means क्या? As I said, go back to Newton's first law. If a object is still or static, the object will remain static. If a object is moving, the object will continue to move with same velocity in a straight line. So this is what the basic fundamental of engineering mechanics. Now what you have to do, you need to understand what is force, what are the different ways force are applied, or different angle में अगर force apply हुआ तो then how you are going to say resolve them. That we'll discuss in the next video. So if you have any question, please write in the comment box. If you are liking our video, then please do like, comment and subscribe. तो उससे थोड़ा पैसा भी मिल जाता है और full time I can contribute for this initiative. Thank you so much.